Hello students, welcome to Time Classes. I hope you are doing well. Today's topic for discussion is statistics. Statistics is one such topic which is not very difficult because जो हम पढ़ने वाले हैं those are very basic things and more or less we can say the questions are to be solved using formula. तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला ड्रिवन अप्रोच रहेगा. So you have to know all the formulas, you have to remember all the formulas so that you can apply while solving the questions. ठीक है? So we are not going to spend lot of time in this chapter क्योंकि छोटा सा चैप्टर है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए नहीं है and it's a fairly easy chapter. So we'll have around 1 hour session on statistics and that will be enough for this topic. ठीक है? If you look at CAT questions on statistics in the past 3 years CAT papers, then you will see there have been 0 questions on statistics. पिछले 3 साल में CAT में statistics के questions नहीं आए हैं. That does not mean कि ये chapter important नहीं है या ये chapter आप ignore कर सकते हो. Okay, let me give you that warning beforehand only. ऐसा नहीं है कि ignore कर सकते हो. Last 3 years में नहीं आया है, but कैट में स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी, although not very frequently. Okay, but you cannot rule out the possibility of getting a question from this chapter. So I would suggest that you prepare this topic also as importantly as you will prepare the other topics. क्योंकि एनीवेज छोटा सा टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इवन यू इन्वेस्ट सम 4-5 hours ऑन दिस टॉपिक, द जॉब इज डन. इतना काफ़ी होगा इस टॉपिक के लिए. बट प्लीज मेक श्योर टू प्रिपेयर दिस टॉपिक एज वेल. ठीक है? अब देखो, although you do not get questions in the exam very frequently from this topic, but this is a very important topic as far as your B school learning is concerned and your corporate life ahead is concerned. क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है जो आप इन डेप्थ पढ़ोगे इन योर बी स्कूल करिकुलम. प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा, डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, बिकॉज प्रोबेबिलिटी एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स फाइंड अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस इन द रियल वर्ल्ड. प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है. खास करके आई एम श्योर ऑल ऑफ यू हैव हर्ड अबाउट एनालिटिक्स एज अ करियर. एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में सबने सुना हुआ है. सो बिजनेस एनालिटिक्स इज अ लॉट बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. तो अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक आज अच्छे से समझ में आ गया and if you learn the basic formula how to apply them, then it will go a long way to help you in your B school curriculum also and your career ahead also. ठीक है? So don't take this topic very lightly कि हाँ चलो question नहीं आता है frequently तो you can just leave that topic. I will suggest that do this topic with utmost sincerity as you do other topics as well. Fine? चलो देखते हैं what all things we have to do in today's class. It's a small topic, so we will be spending around 1 hour for doing this topic. And handout code is QHO1002130. I'll be pasting the questions on the slide, so you don't have to worry about that. So what are we going to learn in statistics? There are two major things we are going to learn in statistics. One is measures of central tendency and one is measures of dispersions. So these are the tools to measure central tendency, ये जो है, and these are the tools to measure dispersion. ठीक है? What do we do in statistics, by the way? Statistics में क्या करते हैं हम? Statistics is basically collection of data, representation of data, analysis of data, and analysis of data is used based on these two things: central tendency, measures of dispersion. सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या चीजें आती है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड. अरिथमेटिक मीन इज आल्सो नोन एज एवरेज, और एवरेज के बारे में हमने वी हैव स्टडीड इन ग्रेट डेप्थ व्हेन वी डिड एवरेज मिक्सचर एलिगेशन. ठीक है? एवरेज को ही अरिथमेटिक मीन कहते हैं. अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ मीन लिखा है
सिर्फ मीन लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इट विल ऑलवेज मीन अरिथमेटिक मीन। अगर ज्योमेट्रिक मीन या हार्मोनिक मीन होगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा स्पेसिफिकली। ओनली मीन मीन्स अरिथमेटिक मीन बाय डिफॉल्ट, या एवरेज कह सकते हैं उसको। Under measures of dispersion, we will discuss range, quartile deviation, mean deviation, standard deviation. Standard deviation के साथ we will also do variance. ठीक है? Let's look at all of these things one by one. Let's start with arithmetic mean. As I said, formula driven approach रहेगा, तो formula पहले देखते हैं. If we have these numbers x1, x2 and so on till xn, then arithmetic mean जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं x के ऊपर बार लिख के, this denotes arithmetic mean. That is equal to x1 plus x2 plus x3 and so on till xn divided by n. This is basically sum of all the terms, yes, sum of all the observations divided by number of observations. ये तो वही चीज है जो एवरेज के लिए आप करते हो. So average or arithmetic mean is sum of all the terms divided by number of terms, right? And in case you need to find sum of all the terms, ये sum of all the terms चाहिए, तो number of terms into arithmetic mean multiply हो जाएगा. ठीक है? Sum of all the terms is number of terms into arithmetic mean. So we'll take examples also. We'll look at the formula. We'll take examples, see how to apply the formula. So they're asking find the arithmetic mean of the following observations. So here we have 6 observations. So what is the arithmetic mean? Arithmetic mean will be equal to 31. Add all the terms. Plus 21 plus 15 plus 19 plus 21 divide by, how many terms are there? 6 terms. Divide by 6. So what do I get? If you add the numerators, you will get 156. Denominator में 6 है, cancel करके आएगा 26, and that's your answer. Fine. क्या किया हमने? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, सीधा फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, you get the answer. Let's look at the second one. 17, 23, 26, 20, 32, 29. यहाँ पे भी you can add all the terms and divide by the number of terms, उससे arithmetic mean आ जाएगा. But if I write this in ascending order, I'll get 17 है पहले, फिर 20 है ना? 17, then 20, then I have 23, then I have 26, then I have 29, then I have 32. If you look at the numbers closely, 3 का difference, 3 का difference, 3 का difference, 3 का difference, 3 का difference. I hope you remember arithmetic mean में जब हम average mixture relegation कर रहे थे, so these are numbers in arithmetic progression, या यूं कह लो equally spaced numbers हैं. Equally spaced numbers में इन सारे numbers का arithmetic mean निकालना है, you can simply do first term plus last term divided by 2. First term plus last term divided by 2, so that becomes 49 by 2, and 49 by 2 is 24.5. ये थोड़ा और आसान हो गया because the numbers were equally spaced numbers, common difference same था. ऐसे सीक्वेंस को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं. तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए यू कैन सिंपली डू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2. ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन, ज्योमेट्रिक मीन. Geometric mean का formula first of all. So if x1, x2 and so on till xn are individual items or observations, then geometric mean is equal to x1 into x2. So this point is basically into x1 into x2 into x3 and so on till xn to the power 1 by n. ठीक है? So basically it is nth root of the product of the numbers. If there are n numbers, then it is equal to, geometric mean is equal to nth root of the product of numbers. मतलब अगर 2 numbers हैं तो उनके प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा. 3 numbers हैं तो प्रोडक्ट का क्यूब रूट होगा. 4 numbers हैं तो प्रोडक्ट का फोर्थ रूट होगा, एंड सो ऑन. ठीक है? So let's look at these two examples. Find the geometric mean of the following observation. क्या करना है? ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकलेगा? ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए आई हैव टू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स. सो 30 into 60 into 180 into 540 into 900. Now
थोड़ा सा इसको केयरफुली करना पड़ेगा। इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई ऑल दीज नंबर्स एक्चुअली, तो ये बहुत बड़ा सा नंबर बन जाएगा और फिर उसका फिफ्थ रूट निकालना है, राइट। फिफ्थ रूट क्यों? क्योंकि 5 नंबर्स हैं तो प्रोडक्ट का फिफ्थ रूट निकालना है। यही चीज फिफ्थ रूट निकालने वाली बात हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दिस थिंग कैन एज वेल बी रिटन एज, इंस्टेड ऑफ राइटिंग फिफ्थ रूट यू कैन राइट दिस होल टू द पावर 1/5। एक ही बात है, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इन सब का प्राइम फैक्टराइज करेंगे। इसका 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 will need to do prime factorization for all these numbers. When you do the prime factorization for all these numbers, this is what you will get: 3 to the power 10 into 2 to the power 10 into 5 to the power 5. इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज करने के बाद अल्टीमेटली ये बनेगा और उसके ऊपर पावर 1/5 भी है। तो 3 का पावर 10, उसके ऊपर पावर 1/5, तो ये पावर 10 और 1/5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा 3 का स्क्वायर। ये और ये इसका पावर 10 और 1/5 मल्टीप्लाई होगा, सो यू लेफ्ट विद 2 का स्क्वायर। 5 का पावर 5 होल टू द पावर 1/5, सो यू लेफ्ट विद 5 का पावर 1। 3 का स्क्वायर 9 into 4 36, 36 into 5 180, एंड दैट्स आवर आंसर। ठीक है, सीधा फॉर्मूला लगाना है एंड वी हैव टू डू आवर कैलकुलेशंस। यहाँ देखेंगे, यहाँ 6 36 216, तो ये थोड़ा सा इसमें पैटर्न देखेंगे तो 6 का पावर 1, दिस इज 6 का स्क्वायर, दिस इज 6 का क्यूब, दिस इज 6 का पावर 4 एंड दिस इज 6 का पावर 5। ठीक है, तो इन सब का प्रोडक्ट करेंगे 6 का पावर 1 इंटू 6 का पावर 2 इंटू 6 का पावर 3 इंटू 6 का पावर 4 इंटू 6 का पावर 5 एंड होल रेस्ट टू द पावर 1/5 अगेन बिकॉज देयर आर 5 टर्म्स, है ना। So this will become basically 6 का पावर ये 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 ये सब ऐड हो जाएगा। तो ये ऐड करके क्या आएगा, 6 to the power 5 4 9, this becomes 15, right। 15 का पावर 1/5, तो पावर का होल पावर में पावर्स विल गेट मल्टीप्लाइड, 15 into 1/5 6 का पावर 3 हो गया which is 216। ठीक है, क्लियर। Okay, let's move ahead and let's see what is harmonic mean। हार्मोनिक मीन क्या होता है, सपोज वी हैव x1 x2 and so on till xn, these are the numbers, then harmonic mean is number of terms divided by sum of reciprocal of the terms। number of terms n है और इन सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल लेके ऐड करना है डिनोमिनेटर में, so number of terms divided by sum of reciprocal of the terms, that gives you harmonic mean। for any two positive numbers a and b, remember this rule, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर्स ए एंड बी है तो उनका अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन। ओके, एंड सेकेंडली ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फॉर दीज टू नंबर्स, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन इनटू हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन, तो इसमें हार्मोनिक मीन पूछा है इन 4 नंबर्स का। तो हार्मोनिक मीन ऑफ 4 नंबर्स इज नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स। तो ये टर्म खुद ही 1/15 है, तो उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, उसका रेसिप्रोकल 15 आएगा, इसका रेसिप्रोकल दूसरे वाले का 17 आएगा, तीसरे वाले का 19 आएगा, एंड फोर्थ वन 1/21 का रेसिप्रोकल 21 आएगा। सो what we get here is 4 divided by, नीचे ऐड करेंगे तो क्या आएगा, नीचे ऐड करके 72 आएगा, and 4 so you can cancel this, so you get 1/18 as the answer, right। Harmonic mean of these 4 numbers is 1/18। next one if you look at it, इसमें हमें क्या बोल रहे हैं, if
The arithmetic mean and geometric mean of two numbers are 48 and 36 respectively. Arithmetic mean 48 है and geometric mean 36 है. Find their harmonic mean. What do we know? Let's apply this formula. Geometric mean का जो square होगा that is equal to arithmetic mean into harmonic mean. So arithmetic mean is what? 48. Geometric mean is 36. And find क्या करना है हमें? Find करना है harmonic mean. So harmonic mean is equal to 36 into 36. 36 का square is 36 into 36 divide by 48 है ना? ये हम कैंसिल कर लेंगे. So 12 3 जा 12 4 जा 4 9 जा 9 3 जा 27. So that's our answer. All right. I hope you understood this. All right. Let's move ahead. Next thing is median. Median क्या होता है? हम median निकालते कैसे हैं? So median is a magnitude of or the value of the middlemost item in a series of value. Middlemost item in a series of value. But very important point is this: when the values have been arranged in order of their magnitude. तो सबसे पहला काम मीडियन फाइंड करने के लिए ये करना है, यू हैव टू अरेंज ऑल द नंबर्स इन एन ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, दोनों में से कोई भी किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, बट यूजुअली इट इज कन्वीनियंट टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि स्मॉलर नंबर टू हायर नंबर स्पॉट करना इज इजियर. तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो. ठीक है. Now, if there are odd number of terms, ये पॉइंट जो है ये कहता है if there are odd number of terms, तो एग्जैक्ट बीच में कोई एक नंबर होगा तो वो नंबर खुद ही मीडियन होगा. ठीक है. बट इफ देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, तो एग्जैक्ट बीच में सिर्फ कोई एक ही नंबर नहीं होगा, एग्जैक्ट बीच में फिर दो नंबर्स होंगे. तो फिर उन दोनों नंबर्स का सम डिवाइड बाय 2 करके जो वैल्यू आएगी वो मीडियन होगा. If there are odd number of terms, तो exact middle term कोई एक ही होगा, that term itself is the median. If there are even number of terms, then there will be two terms in the middle. So median will be sum of those two terms in the middle divided by 2. ठीक है. Okay. Example देखेंगे तो it will be more clear to you. Question number 4 का first part, if you look at it, find the median of the observations. Now, very important thing, median में सबसे पहला काम you have to arrange all the numbers in an order, and by default will arrange in ascending order. ठीक है. तो ascending order में पहले इनको arrange करना है. So it is the smallest number that you see out of all these numbers. I see smallest number is 31. तो 31 को पहले लिख लेते हैं. Sorry, 31 नहीं 30. 30 is the smallest number. Next smallest is 32. उसके बाद नेक्स्ट में है 36. उसके बाद नेक्स्ट में है 37. उसके बाद नेक्स्ट है 41. उसके बाद नेक्स्ट है 43. उसके बाद आखिरी में बचा है 48. So I have arranged all the numbers in ascending order. How many terms do you see? 1 2 3 4 5 6 7. Odd number of terms. तो एग्जैक्ट बीच में कोई एक ही टर्म होगा. एग्जैक्ट बीच में कौन सा टर्म है? एग्जैक्ट बीच में ये वाला टर्म है. तो ये टर्म खुद ही मीडियन होगा. सो दिस इज माय मीडियन. ठीक है. दिस इज आवर मीडियन. सो आंसर इज 37. राइट. नेक्स्ट वाला देखते हैं, सेकेंड पार्ट. इधर कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स हैं. तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं. बट फर्स्ट थिंग वी हैव टू डू इज अरेंज ऑल द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो अरेंज करने टाइम असेंडिंग ऑर्डर में विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर दैट यू सी हियर? 36. तो लेट अस फर्स्ट राइट 36. उसके बाद कौन सा है? 38. 38. देन विच नंबर डू वी हैव? 42. उसके बाद 43. 42 43. उसके बाद 46. उसके बाद 49. उसके बाद 53. उसके बाद 54.
1 2 3 4 5 6 7 8, तो एग्जैक्ट बीच में तो कोई भी नंबर नहीं है ना, एग्जैक्ट बीच में ये दोनों है फिर। तो in that case what we do, sum of the middle two numbers and divide that by 2, sum of the middle two numbers and divide that by 2। 43 और 46 के एग्जैक्ट बीच में जो नंबर आएगा वो 44.5 होगा। 43 प्लस 42 डिवाइड बाई 2 का मतलब 43 और 46 के बीच में एग्जैक्ट जो नंबर आएगा वो 44.5 होगा। और यू कैन ऐड दीज टू, basically this is going to be 89 by 2, 89 by 2 is 44.5, so that's the median in this case। ठीक है, let's look at क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन में दे आर सेइंग फाइंड द रेंज ऑफ द वैल्यूज, दैट द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन this 23 21 15 27 x 32 and 12 can take, find the range of the values that the median of all these observations can take। क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को अरेंज करना होता है, राइट। तो एक नंबर यहाँ पे x है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता। ऑलराइट, x को अभी छोड़ देते हैं, लेट्स कीप इट असाइड। x को छोड़ के बाकी नंबर्स इफ आई अरेंज द रिमेनिंग नंबर्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, देन सबसे छोटा 12 है, लेट मी राइट इट हियर 12, उसके बाद 15 है 15, उसके बाद आई सी 21 21, उसके बाद आई सी 23 23 23, then we have 27, then we have 32, और एक नंबर x है, एक नंबर x है जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है। तो x को छोड़ के बाकी के 6 नंबर्स ये हैं, x को इंक्लूड करके देयर आर 7 नंबर्स। अब जब तक x की वैल्यू पता नहीं है तब तक मीडियन क्या होगा वी डोंट नो। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, सो x की वैल्यू इफ आई टेक x इज इक्वल टू 21, अगर x को मैं 21 ले लूं, ये कहां से देखा मैंने, अभी जो 6 नंबर्स दिख रहे हैं x को छोड़ के, एक नंबर x भी है जो हमने लिखा नहीं अभी तक, x को छोड़ के बाकी के जो 6 नंबर्स हैं उसमें मिडिल टू नंबर्स आर 21 एंड 23, दैट इज व्हाई आई एम लुकिंग एट x इक्वल टू 21। उसके बाद x इक्वल टू 23 भी देखेंगे एंड विल लुक एट ऑल पॉसिबल केसेस। अगर x 21 है तो 21 के बगल में ही लिखा जाएगा ना, असेंडिंग ऑर्डर में जब लिखोगे तो 21 एंड 21 विल बी रिटन टुगेदर। इफ x इज 21, नाउ इफ आई अरेंज ऑल द नंबर्स 12 15 21 21, ये 21 तो अलग से है ही, अब x की वैल्यू भी 21 हो गई तो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, देन विल हैव 23 27 32, विच इज द मीडियन, जो सबसे बीच में है ये है मीडियन। तो अब हम इस केस में मेरा मीडियन जो है वो 21 है। इफ x इज लेस देन 21, अगर x 21 से छोटा है तो x जो हम लिखेंगे वो 21 से पहले कहीं लिखेंगे ना। अगर x 21 से छोटा है तो x 21 के पहले कहीं आएगा, तो 21 के पहले 3 टर्म्स हो जाएंगे, 21 के बाद 3 टर्म्स हो जाएंगे, बीच में 21 ही होगा। इन दिस केस ऑल्सो मीडियन इज 21। What if x is equal to 23? अगर x 23 है तो 23 के बगल में ही लिखा जाएगा। तो ये 6 नंबर्स में अगर x की वैल्यू 23 हो गई तो 23 के बगल में ही लिखा जाएगा। तो एग्जैक्ट बीच में कौन सा नंबर आएगा, एग्जैक्ट बीच में फिर 23 ही रहेगा। तो इस केस में मीडियन होगा 23। What is x is greater than 23? अगर x ग्रेटर देन 23 है तो 23 के बाद लिखा जाएगा, 23 के बाद 3 टर्म्स हो जाएंगे, 23 के पहले 3 टर्म्स हैं, तो मीडियन फिर से 23 ही होगा क्योंकि एग्जैक्ट बीच में 23 रहेगा। और अगर x की वैल्यू 23 और 21 के बीच में लाई करती है तो उस केस में x का वैल्यू 21 और 23 के बीच में यहां लिखा जाएगा, राइट। अगर x 21 और 23 के बीच में है तो x 21 और 23 के बीच में यहाँ लिखा जाएगा।
तो मीडियन क्या होगा, x का वैल्यू खुद ही होगा जो बीच में होगा, क्योंकि बीच में x होगा तो x की जो भी वैल्यू होगी वही खुद ही मीडियन हो जाएगी। सो इन दिस केस x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है लेस देन 23 ग्रेटर देन 21, ठीक है। तो x की वैल्यू जो जो हो सकती थी मैंने सारी पॉसिबिलिटीज चेक कर ली। x या तो 21 के इक्वल होगा, या 21 से छोटा होगा, या 21 और 23 के बीच में होगा, या तो 23 होगा, या 23 से बड़ा होगा। सारी पॉसिबिलिटीज मैंने चेक कर दिया। सारी पॉसिबिलिटीज चेक करके आप देखोगे मीडियन या तो 21 आ रहा है, या फिर 23 आ रहा है, या फिर 21 और 23 के बीच में आ रहा है। सो आई कैन से मीडियन 21 हो सकता है, 23 भी हो सकता है, और इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के टर्म्स में इंटरवल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं। दिस मीन्स, इसको ऐसे लिखने का मतलब ये है कि मीडियन का जो रेंज है वो 21 से 23 तक है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मीडियन विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 21 एंड लेस देन इक्वल टू 23। दिस इज माई रेंज 21 टू 23, ठीक है, क्लियर है। ओके, लेट्स मूव अहेड। एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। The median of 15 observations is 29 if two new observations is 21 and 35। तो मीडियन अगर 29 है, ठीक है, मीडियन अगर 29 है, इसका मतलब ये 15 ऑब्जर्वेशन में एग्जैक्ट बीच में 29 आएगा। अब इसमें दो न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड कर रहे हैं 21 एंड 35। 21 तो 29 से पहले कहीं लिखा जाएगा, और 35 29 के बाद कहीं लिखा जाएगा। तो ये दो न्यू टर्म्स ऐड करने से वी हैव नाउ 17 ऑब्जर्वेशंस। उन 17 ऑब्जर्वेशन में से एक 29 के पहले आ गया जो एक्स्ट्रा था, और एक 29 के बाद आ गया 35 जो एक्स्ट्रा था। तो अब बीच में कौन सा टर्म होगा, बीच में तो अभी भी 29 ही होगा ना, क्योंकि दो एक्स्ट्रा टर्म जो आपने लिखे 21 और 35, एक 29 से पहले लिखा जाएगा, एक 29 के बाद लिखा जाएगा। तो इन द मिडल वी स्टिल हैव 29, सो द न्यू मीडियन इज स्टिल 29, अभी भी यही है। सेकेंड वाला देखते हैं। Median of 19 observations is 25 if each observation is less than the median, if each observation less than the median is decreased by 6। 19 observation में अगर median 25 है तो इसका मतलब एग्जैक्ट बीच में 25 होगा जब डेटा अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि 19 ऑब्जर्वेशन है ना, ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो एग्जैक्ट बीच वाला टर्म मीडियन होता है, तो एग्जैक्ट बीच में 25 ही रहेगा। इफ ईच ऑब्जर्वेशन लेस देन द मीडियन, 25 से जितने ऑब्जर्वेशन छोटे थे दे आर डिक्रीज्ड बाय 6। 25 से छोटे जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसको 6 और डिक्रीज कर देना है, तो जो नई वैल्यूज होंगी वो तो 25 से छोटी ही रहेंगी ना। एंड ईच ऑब्जर्वेशन मोर देन द मीडियन इज इंक्रीज्ड बाय 9। जो 25 से बड़े जितने ऑब्जर्वेशन हैं उन सबको 9 इंक्रीज कर दिया। जो 25 से बड़े थे वो थोड़े और बड़े हो गए, तो 25 के बाद वाले टर्म्स फिर भी बाद में ही आएंगे, और 25 से पहले वाले टर्म फिर भी 25 के पहले ही आएंगे। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली अगेन 25 ही बीच में रहने वाला है। सो न्यू मीडियन इज स्टिल 25, ठीक है, नया मीडियन वापस 25 ही होगा। All right, I hope this is clear. चलो let's move ahead and look at what is mode. Mode क्या होता है? Mode होता है it is the item which is most often found in the given set of observation, the value occurring the highest number of times। या यूं कह लो ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा बार अपीयर हो रहा है, या ऐसा नंबर जिसके आने की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, दैट नंबर इज मोड, ठीक है। अच्छा, मोड एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो देखते हैं दोनों एग्जांपल्स हमारे पास। इसमें यू डू नॉट हैव टू अरेंज डेटा अरेंज करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट हैव टू थिंक कौन सा सबसे नंबर सबसे ज्यादा बार अपीयर हुआ।
यहाँ पे 29 29 29 29, so 29 appears 4 times. Okay, 22 एक बार, दो बार, दो ही बार आ रहा है। 24 एक बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। बाकी के नंबर्स, 23 is appearing twice, 28 is appearing only once, 40 is appearing only once, 25 is appearing only once. So which number is appearing most number of times? 29. 29 चार बार आ रहा है, कोई और नंबर चार बार नहीं आ रहा या चार बार से ज्यादा बार नहीं आ रहा। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस नंबर की है? 29 है, तो हमारा आंसर क्या होगा? मोड इज 29। ठीक है, मोड इज 29। इधर देखते हैं, इधर इफ यू लुक केयरफुली, 35 एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया। उसके बाद इफ यू सी 30 1 2 तीन बार आया। और बाकी के नंबर्स, 36 देखोगे तो दो बार आ रहा है, 36 इज अपीयरिंग ट्वाइस, 32 is appearing twice, sorry 34 is appearing twice, 43 एक ही बार आया, 28 एक ही बार आया। तो सबसे ज्यादा बार आई कैन सी कि 35 is appearing, 35 is appearing 3 times and 30 is also appearing 3 times। 35 की फ्रीक्वेंसी भी 3 है और 30 की भी फ्रीक्वेंसी 3 है, बोथ ऑफ देम आर अपीयरिंग इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, दोनों ही तीन तीन बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे दो मोड्स होंगे, 30 भी मोड होगा और 35 भी मोड होगा, ये दोनों मोड होंगे। ठीक है, सो मोड एक से ज्यादा भी हो सकता है। नाउ सपोज आई गिव यू अनदर एग्जांपल क्विकली। अगर ये नंबर्स हैं 25 17 13 59 56 48 81, इनमें देखोगे इनमें मोड क्या है, तो इनमें कोई भी नंबर रिपीट ही नहीं हुआ, इसमें सारे नंबर एक एक बार ही आ रहे हैं। एंड व्हाट वी विल से कि सारे ही मोड है? नो, अगर सारे नंबर एक एक बार ही आ रहे हैं तो सारे मोड नहीं होंगे। देन वी विल से दैट मोड इज इल डिफाइंड। ये स्टैटिस्टिकल टर्म हम यूज करते हैं ऐसे केसेस के लिए, दैट मोड इज इल डिफाइंड। आप इसको लेमन टर्म्स में समझ सकते हो कि मोड इज नॉट डिफाइंड। तो मोड होने के लिए एटलीस्ट वन नंबर शुड बी रिपीटेड एटलीस्ट 2 टाइम्स। अगर सारे नंबर एक एक बार ही आ रहे हैं तब मोड होगा ही नहीं, मोड इज इल डिफाइंड। ठीक है, क्लियर? ओके, नाउ लेट्स लुक एट दिस एडिशनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। अब इसमें एक टेबल बना हुआ है, इसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलते हैं। तो x इज द वैल्यू फॉर ऑल द ऑब्जर्वेशंस और ए एफ लिखा हुआ है। ठीक है, एफ का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी मतलब कि ये नंबर कितनी बार अपीयर हुआ है डेटा में। तो x 11 एंड फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब ये 11 जो है, दिस ऑब्जर्वेशन 11 कम्स 2 टाइम्स इन द डेटा, उसकी फ्रीक्वेंसी 2 का मतलब वो दो बार आया है डेटा में। 11 appears 2 times in the data, 13 appears 4 times in the data, 15 appears 6 times in the data and so on। तो इन्होंने बोला इसका मीन भी फाइंड करो, मीडियन भी फाइंड करो, मोड भी फाइंड करो। ठीक है, इस टेबल को ऐसे बना लेते हैं, x की वैल्यू 11 13 15 17 19, फ्रीक्वेंसी 11 की 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 10 है। ठीक है, देन मेक अनदर कॉलम जिसमें हम f इंटू एक्स फाइंड करेंगे, f इंटू एक्स। तो 11 इंटू 2 22, 13 इंटू 4 52, 15 इंटू 6 90, 17 इंटू 8 136, 19 इंटू 10 190। तो एफ एक्स फाइंड करने का मतलब ये है, आप बेसिकली ये एडिशन कर रहे हो। 11 दो बार आया है ना,
तो सम क्या होगा, 11 प्लस 11 होगा विच इज सेम एज 11 इंटू 2। 13 कितनी बार आया, 4 बार आया ना, तो 13 4 बार ऐड करेंगे, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13 दैट इज सेम एज 13 इंटू 4। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो मीन है वो वेटेड मीन है, ये फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द वेट। तो वैल्यू इंटू वेट प्लस वैल्यू इंटू वेट प्लस वैल्यू इंटू वेट डिवाइड बाय टोटल वेट हो जाएगा। तो ये पहले एफ एक्स फाइंड करेंगे, एफ एक्स फाइंड किया 490, ये समेशन ऑफ एफ एक्स आ गया, और समेशन ऑफ एफ 30 का मतलब ये है कि 11 2 बार आया, 13 4 बार आया, 15 6 बार आया एंड सो ऑन। तो टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स तो फ्रीक्वेंसी का जो सम होगा वही होगा ना, 2 नंबर्स प्लस 4 नंबर्स प्लस 6 नंबर्स प्लस 8 नंबर प्लस 10 नंबर, इन सब का सम करेंगे तो 30 आएगा। तो सारे टर्म्स का सम जो होगा इट इज नथिंग बट एफ एक्स। तो जो हमारा मीन है बाय डिफॉल्ट इट इज अरिथमेटिक मीन, इट विल बी समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ, 490 डिवाइडेड बाय 30, तो ये हो गया 49/3। सो दैट इज आवर मीन, 49/3 जो है वो मीन है। ठीक है, मीडियन कैसे निकालेंगे, मीडियन के लिए हमें डेटा अरेंज करना पड़ता है, मोड के लिए डेटा अरेंज करने की जरूरत नहीं होती। मोड क्या होता है, मोस्ट फ्रीक्वेंट नंबर। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन से नंबर की है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई कैन क्लियरली सी 19 की है ना, 19 10 बार अपीयर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वही मोड होगा। तो मोड क्या होगा 19, बिकॉज 19 अपीयर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, दैट बीइंग 10 टाइम्स, मोड इज 19, दैट इज वेरी इजी टू स्पॉट। सो मोड इज इक्वल टू 19। अच्छा, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, मीडियन के लिए तो डेटा अरेंज करना पड़ता है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स तो 30 हैं। अब सारे नंबर्स अगर मैं अरेंज करने जाऊं तो सबसे छोटा नंबर 11 है, लकीली सारे नंबर्स ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है, 13 11 15 एंड सो ऑन। 11 अपीयर्स 2 टाइम्स, तो डेटा ऐसे होगा 11 2 बार, 13 अपीयर्स 4 टाइम्स, 13 13 13 13, 15 appears 6 times, 15 15 15 15 15 15, 17 appears 8 times, 17 17 17 17 17 and so on। आगे की जरूरत नहीं है, सारे नंबर्स ऐसे लिस्ट करोगे तो देयर आर 30 नंबर्स। नंबर्स ऑलरेडी अरेंज कर दिया मैंने असेंडिंग ऑर्डर में, एग्जैक्ट बीच में कौन से नंबर्स होंगे, इफ देयर आर 30 नंबर्स which two terms will be in the exact middle, कौन से होगा 15th और 16th। 15th और 16th काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 15th and 16th are the middle two terms। so what is the median, median is middle two terms का sum divide by 2, दोनों ही 17 है ना, तो दोनों का sum divide by 2 करके भी 17 ही तो आएगा। so median is 17। ठीक है, फाइन, आई होप इट इज क्लियर। ऑल राइट, आगे करते हैं। नेक्स्ट वी हैव समथिंग नोन एज एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला ये होता है, दिस कैन बी यूज्ड इन सम प्रॉब्लम्स डिपेंडिंग ऑन प्रॉब्लम में इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन, मतलब 3 टाइम्स द मीडियन, माइनस 2 इंटू मीन मीन्स ट्वाइस द मीन, एंड दिस बाय डिफॉल्ट इज अरिथमेटिक मीन। So mode is for a given data, mode is equal to 3 times median minus 2 times mean, but condition क्या है, this formula is valid for distribution which are moderately symmetric, distribution which are moderately symmetric उन distribution के लिए formula valid होता है। completely symmetric या symmetric distribution क्या होता है, symmetric distribution is one where mean median and mode coincide, मतलब मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन को सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। बट दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर अ मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। आई विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज मॉडरेटली सिमेट्रिक बिकॉज वी आर नॉट गेटिंग इन डेप्थ ऑफ स्टैटिस्टिक्स, उसकी जरूरत नहीं है। बट ये मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन वाली चीज क्वेश्चन में
गिवन होती है, क्वेश्चन में गिवन है तभी यूज करेंगे, अदरवाइज नहीं यूज करेंगे। तो इफ यू सी इस क्वेश्चन में इट सेज mean and the median of a moderately symmetric distribution are 40.5 and 33 respectively. Here it says moderately symmetric distribution. तो mean जो है is equal to 40.5 and median जो है that is equal to 33. तो मोड क्या होगा, फॉर्मूला लगाएंगे, मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द मीडियन माइनस 2 टाइम्स द मीन, यही फॉर्मूला है। 3 into 33 is 99 minus 40.5 into 2 is 81, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। सो दिस इज आवर मोड। ठीक है, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला एज इट इज लगा देना, इंफॉर्मेशन गिवन है, विल गेट द आंसर। सेकेंड पार्ट देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन यू सी द वर्ड मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, इज 36। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड। ठीक है, तो हमें जो गिवन है वो ये गिवन है, मीन माइनस मीडियन दैट इज इक्वल टू 36। मीन और मीडियन का डिफरेंस दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मीडियन ऑफ अ मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 36, तो ये गिवन है, बट वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड द मोड। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है मीन माइनस मोड, फाइन, दिस इज व्हाट वी रिक्वायर। अच्छा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, मॉडरेटली सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो आई कैन राइट मीन माइनस मोड की जगह आई कैन राइट, मोड क्या है, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो हो गया मीन माइनस 3 मीडियन, सो दिस बिकम्स माइनस 3 मीडियन, और ये मीन माइनस ऑफ माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो मीन प्लस ट्वाइस ऑफ मीन बिकम्स थ्राइस ऑफ मीन, राइट। अब इसमें से 3 कॉमन निकाल के आई कैन राइट मीन माइनस मीडियन, तो हो गया 3 इंटू मीन माइनस मीडियन इज 36, वी ऑलरेडी नो, 3 into 36, 3 into 36 is 108, we know that, so answer is 108। ठीक है, so I hope this is clear how we can apply empirical formula given की moderately symmetric distribution question में है already। ठीक है ना, okay, let's move ahead। now let's look at the tools for measuring dispersion। तो सबसे पहले उसमें रेंज आता है, रेंज बहुत सिंपल सा चीज है, इट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, तो किसी भी डेटा में मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करेंगे तो वो उस डेटा का रेंज हो जाएगा, इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, जैसे यहाँ पे है फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन दीज ऑब्जर्वेशंस, वी जस्ट हैव टू स्पॉट कि इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर जो है वो है इसमें से 32, and which is the smallest, smallest is 10, so range क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू मतलब 22। ठीक है, second one says if the range of these numbers is 24, range 24 है। ठीक है, so find the value of x, we have to find the value of x, x इन सारे नंबर्स में से एक नंबर है। ठीक है, तो x को छोड़ के बाकी के नंबर्स देखेंगे, तो बाकी के नंबर्स में से मैक्सिमम क्या है 35 और मिनिमम क्या है 12, except x the maximum is 35 and the minimum is 12, and 35 और 12 का डिफरेंस 24 तो नहीं होता है obviously, that means x has to play some role here,
Now there are two situations. X can be maximum. So if X is maximum, then x माइनस x अगर मैक्सिमम है तो x मैक्सिमम हो गया, मिनिमम तो 12 होगा, x माइनस 12 मस्ट बी इक्वल टू 24, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 36. ठीक है, बट ऐसा भी तो हो सकता है, इफ x इज मिनिमम देन व्हाट हैपेंस, इफ x इज मिनिमम इन दैट केस x तो मिनिमम है और बाकी के नंबर्स में से मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम जो है वो 35 है. इन दैट केस मैक्सिमम माइनस x को हमने मिनिमम लिया है, दैट मस्ट बी द रेंज विच इज गिवन एज 24. इस केस में x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देयर आर टू वैल्यूज ऑफ x एक्चुअली, 36 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है. ठीक है, देयर आर टू आंसर्स. ऑलराइट, थर्ड पार्ट देखते हैं. The range of these numbers is 23. Find the number of integral values that x can take. इसका रेंज 23 है. x को छोड़ के जो बाकी के नंबर्स हैं उसमें से मैक्सिमम है 42. x को छोड़ के जो बाकी के नंबर्स हैं उसमें मैक्सिमम 42 है और मिनिमम जो है दैट इज 19. और इन दोनों का डिफरेंस जो है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 23 ही है. इन दोनों का डिफरेंस 23 ही है. इसका मतलब x की जो वैल्यू है, इन दोनों का डिफरेंस 23 और रेंज भी 23 ही है गिवन इन द क्वेश्चन. दैट मींस x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है फ्रॉम 19 टू 41. इन दिस केस x कैन टेक एनी वैल्यू बिकॉज रेंज जो है ये 19 और 42 का डिफरेंस है, वो तो हमें यहाँ दिख ही रहा है 23. रेंज का x से कोई लेना देना नहीं है. मतलब x कैन बी एनी नंबर बिटवीन, x कैन बी एनी नंबर फ्रॉम 19 टू 42. तो हम ये बोल सकते हैं, पूछा है x कैन बी एनी नंबर, x कैन बी एनी इंटीजर फ्रॉम 19 टू 42. 19 टू 42 में कितने इंटीग्रल वैल्यूज आते हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग फॉर. तो 19 से 42 तक यू कैन काउंट द इंटीग्रल वैल्यूज, देयर विल बी 24 इंटीग्रल वैल्यूज. 19 से लेके 42 तक, 19 और 42 दोनों इंक्लूडेड है उसमें. So there will be 24 values. So how many integral values can x take? 24 values. क्वेश्चन का आंसर 24 होगा. ठीक है, आई होप इट इज क्लियर. ऑलराइट, ओके. Now let's learn about mean deviation. What is mean deviation? Mean deviation क्या होता है? Mean deviation is calculated about mean or median or mode. तो mean deviation हम about mean भी calculate कर सकते हैं, about median भी कर सकते हैं, about mode भी कर सकते हैं. बट अगर लिखा है सिर्फ mean deviation, then by default it is mean deviation about mean, and by default it is arithmetic mean. Mean deviation by default arithmetic mean के about होगा. अगर मीडियन या मोड के अबाउट निकालना है तो वो क्वेश्चन में लिखा होगा. ठीक है, बट बाय डिफॉल्ट मीन डिविएशन इज अबाउट मीन, and this mean is by default arithmetic mean. Mean deviation is the average of deviations of each item in the data set from the mean. Average of the deviations of each observation from the arithmetic mean. Now a sentence सुनने में कॉम्प्लिकेटेड है बट कैलकुलेशन का पार्ट देखोगे यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू. xi मतलब x की वैल्यूज या दीज आर ऑल द ऑब्जर्वेशंस, उसमें से माइनस a. अब ये a मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है, विल डिपेंड ऑन द क्वेश्चन. अगर मीन डिविएशन निकालना है तो ये मीन होगा, अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो ये मीडियन होगा, मीन डिविएशन अबाउट मोड निकालना है तो ये मोड होगा, एंड सो ऑन. इसका मॉडुलस लिया है हमने, तो व्हेन वी राइट xi माइनस a, इसके आगे हमने मॉडुलस लिया है, मतलब ऑब्जर्वेशन और मीन का डिफरेंस, एंड वी हैव टू ओनली कंसीडर पॉजिटिव डिफरेंस.
और ऐसे जितने भी डिफरेंसेस हैं उन सबका सम, दैट इज व्हाई दिस समेशन इज यूज्ड, एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। Now, if there are only two numbers, mean deviation of any two numbers a and b, तो उसके लिए हम सीधा सीधा a minus b का मॉडुलस डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं। If I have to find mean deviation of any two numbers, then उनके डिफरेंस का मॉडुलस, मॉडुलस का मतलब ये डिफरेंस जो भी आ रहा है उसका सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, दैट इज व्हाई दिस मॉडुलस साइन। ओके, इसको करते हैं, देन विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर डूइंग। फाइंड द मीन डिविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अबाउट देयर मीन। यहाँ तो लिखा है अबाउट देयर मीन, नहीं भी लिखा होता तो बाय डिफॉल्ट मीन ही होता। फर्स्ट थिंग यू हैव टू फाइंड इज मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए इन सब का सम करना पड़ेगा, 30 प्लस 23 प्लस 14 प्लस 32 प्लस 31 डिवाइड बाय 5। ठीक है, so this will come out to be 130 by 5 which is 26। अब हमें क्या करना है, जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं 30 माइनस 26, 30 माइनस 26 का मॉड। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग मीन डिविएशन, उसको शॉर्ट में एमडी लिखते हैं। 30 माइनस 26 का मॉड प्लस ये समेशन का मतलब ऐसे जितने भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उन सबका सम करना है, फिर 23 माइनस 26 का मॉड, फिर 14 माइनस 26 का मॉड, फिर 32 माइनस 26 का मॉड, फिर 31 माइनस 26 का डिवाइड बाय हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देयर आर 5 टर्म्स, 1 2 3 4 5, एंड देन वी सॉल्व दिस। तो 30 माइनस 26 4 होगा, 4 का मॉड 4 ही रहेगा। 23 माइनस 26 इज -3, लेकिन -3 का मॉडुलस साइन है तो +3 होगा। 14 माइनस 26 इज -12, -12 का मॉडुलस साइन इज +12। 32 माइनस 26 इज 6, वो तो प्लस ही है तो प्लस ही रहेगा। एंड 31 माइनस 26 इज 5, 5 रहेगा, एंड डिवाइड बाय 5। So what do we get? 4 3 7 12 19 11 30 by 5, 10 30 by 5 is 6। So mean deviation जो है वो 6 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द मीन ऑफ द डेटा, वो 26 है। उसके बाद इन नंबर्स का डिफरेंस इस नंबर से, 30 और 26 के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस इज 4, 23 एंड 26 के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस इज 3, 14 और 26 के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस इज 12 एंड सो ऑन। सो जस्ट ऐड द डिफरेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स जितने भी हैं। ये जो आपने लिखा है 1 2 3 4 5, these are the deviations of each item from the mean. This is the sum of all the deviations, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविएशन किया तो दिस इज द एवरेज ऑफ द डिविएशन ऑफ ऑल द टर्म्स फ्रॉम द मीन, एंड दैट इज व्हाट द स्टेटमेंट सेज, मीन डिविएशन इज द एवरेज ऑफ डिविएशंस ऑफ ईच आइटम इन द डेटा फ्रॉम द मीन। फाइन, तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला है और उसका एप्लीकेशन है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, आंसर आ जाएगा। Let's look at this question. Find the mean deviation of 30 and 40. तो दो ही नंबर्स हैं, दो ही नंबर्स का मीन डिविएशन ऐसे फाइंड हो सकता है। So 30 माइनस 40 का मॉड डिवाइड बाय 2, माइनस 10 का मॉड डिवाइड बाय 2, माइनस 10 का मॉड इज +10, +10 डिवाइड बाय 2 which is +5. So that is answer 5. ठीक है, I hope it is clear to you. Okay, let's move ahead. अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना होगा, अगर मीन डिविएशन अबाउट मीडियन निकालना है तो जो भी डेटा दिया होगा उसका पहले मीडियन निकालेंगे हम। ठीक है, और मीडियन निकालने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अरेंज द डेटा एंड देन यू फाइंड द मीडियन। तो मीडियन निकालने के बाद सारे टर्म्स का डिफरेंस मीडियन से लेना है।
फिर उसका मॉडुलस करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना है। अगर मीन डिविएशन अबाउट मोड होगा तो यू फाइंड द मोड क्या है डेटा में से, देन यू टेक द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म फ्रॉम द मोड, टेक द मॉडुलस साइन ऑफ द डिफरेंस एंड देन ऐड ऑल द डिफरेंसेस, देन डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ मीन डिविएशन लिखा है तो बाय डिफॉल्ट इट इज मीन डिविएशन अबाउट मीन। अगर मीडियन या मोड के अबाउट होगा तो वो क्वेश्चन में दिया होगा। ऑलराइट, नाउ लेट अस लुक एट व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन डेफिनेशन वाइज देखोगे तो it is a root mean squared deviation taken about the mean, root mean squared deviation taken about the mean। स्टैंडर्ड डिविएशन नॉर्मली मीन के अबाउट ही होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, समेशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स, ये एक्स बार का मतलब मीन है, तो एक्स आई माइनस एक्स मीन उसका होल स्क्वायर, ऐसे जितने भी आएंगे डिविएशंस उसका स्क्वायर करना है, उन सब का सम करना है, दैट इज बाय द समेशन साइन एंड डिवाइड बाय द नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन यू टेक द स्क्वायर रूट, दैट इज रूट का मतलब स्क्वायर रूट, मीन स्क्वायर्ड डिविएशन। तो पहले आपने डिविएशन निकाला एक्स आई माइनस एक्स मीन करके, फिर उसका स्क्वायर किया और उसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कर रहे हो, तो यू आर फाइंडिंग मीन स्क्वायर्ड डिविएशन एंड देन यू आर टेकिंग द रूट ऑफ दैट, स्क्वायर रूट ऑफ दैट। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यहाँ पे है एंड दिस ऑल्सो इक्वल्स दिस। तो स्टैंडर्ड डिविएशन शॉर्ट में एसडी लिखते हैं, वो आप इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हो, इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट। यहाँ एक्स आई का स्क्वायर मतलब जितने भी टर्म्स हैं उन सबका स्क्वायर करके ऐड करना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स करना है, माइनस एक्स मीन, ये मीन ऑफ ऑल द नंबर्स का स्क्वायर करना है, और देन यू टेक द स्क्वायर रूट। दिस फॉर्मूला इज आल्सो ओके, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन नॉन नेगेटिव होता है, तो अगर स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो स्क्वायर रूट में विल टेक ओनली द पॉजिटिव वैल्यू नॉट द नेगेटिव वैल्यू। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, जीरो हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होगा, so we'll only consider positive value of the square root। The square root of standard deviation is variance, sorry the square of standard deviation is variance। शुरू में हमने वेरिएंस के बारे में भी बोला था कि वेरिएंस भी करेंगे, तो वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस इज नथिंग बट स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला के टर्म्स में भी देखोगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो है ये क्वांटिटी ये वेरिएंस है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, है ना। वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट ही तो होगा ना। तो ये वेरिएंस है, जो सर्कल्ड ब्लू पार्ट है दिस इज वेरिएंस, और उसी का स्क्वायर रूट कर देंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा। ठीक है, दिस फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। तो पहला काम ये मीन निकालना है, मीन निकालते हैं। सो मीन इज इक्वल टू 30 प्लस 22 प्लस 19 प्लस 28 प्लस 26 डिवाइड बाय 5। देयर आर 5 ऑब्जर्वेशन। ऊपर ये सारा ऐड करेंगे तो आई विल गेट 125, 125 बाय 5 इज 25। ये हमारा मीन हो गया। अब आपको क्या करना है, ये जितने भी टर्म्स हैं उनमें से ये मीन माइनस करना है और उसका स्क्वायर करना है। सो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 30 माइनस 25 उसका होल स्क्वायर प्लस 22 माइनस 25 उसका होल स्क्वायर प्लस 19 माइनस 25 उसका होल स्क्वायर प्लस 28 माइनस 25 उसका होल स्क्वायर प्लस 26 माइनस 25 उसका होल स्क्वायर। ठीक है, and then you have to divide it by the number of terms. Number of terms are 5, divide by 5।
30 माइनस 25 5 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। 22 माइनस 25 इज -3, -3 का होल स्क्वायर +9 हो गया। 19 माइनस 25 इज 6, सॉरी -6, -6 का होल स्क्वायर 36 हो गया। 28 minus 25 3, 3 का होल स्क्वायर इज 9 and 26 minus 25 is 1, 1 का स्क्वायर इज 1 डिवाइड बाय 5। ऐड करके कितना आया? 36 plus 9 is 45, 45 plus 10 55, 80 आ रहा है, 80 by 5 आ रहा है। 80 by 5 is, ऊपर आया 80, नीचे आया 5, 80 by 5 is 16, ये रूट 16 बचेगा, और रूट 16 4 होता है, -4 नहीं लेंगे, विल टेक ओनली पॉजिटिव वैल्यू, सो 4। दिस इज आवर स्टैंडर्ड डिविएशन, इट इज 4। वेरिएंस क्या हुआ? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो वेरिएंस विल बी 16। स्टैंडर्ड डिविएशन इज 4, वेरिएंस विल बी 16। या यूं कर लो, वेरिएंस ये स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट होगा, वेरिएंस ये वेरिएंस है, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया 4। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ऑलराइट, लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। इसका स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है, थर्ड पार्ट है पिछले वाले क्वेश्चन का ही। यू हैव टू फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दीज नंबर्स। अब यहाँ पे क्या दिक्कत है, ये सारे वेरिएबल के फॉर्म में दे रखा है, x x x x x and x plus 7। Finding standard deviation of these numbers, we can easily do that by taking some random value for x, and for sake of convenience x को आप 0 ले लो, x को 0 ले लेते हैं। ठीक है, x की जगह हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस यू टेक x की जगह पे 0 and we'll get the same standard deviation। इन सब का स्टैंडर्ड डिविएशन, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी सेम एज इनका स्टैंडर्ड डिविएशन। तो नाउ आई हैव 0 0 0 0 0 0 एंड 0 plus 7 इज ऑब्वियसली 7। ये सारे नंबर्स हैं मेरे पास। स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए ऑब्वियसली सबसे पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो इन सब का मीन क्या होगा? मीन होगा इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इन सब का सम करोगे तो 7 आएगा, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज आल्सो 7, so mean is 1। Then what will you do for standard deviation is, 0 minus 1 and उसका whole square, so 0 minus 1 is -1, उसका whole square is 1, 0 minus 1 उसका whole square 1, 0 minus 1 उसका whole square 1, तो ये 1 तो 6 बार आएगा, ये आएगा, एंड लास्ट में आएगा 7 minus 1 6, 6 का whole square is 36 डिवाइड बाय 7, because number of terms are 7। So now you get root of 42 by 7, that means root of 6। स्टैंडर्ड डिविएशन ये है। और इसका अगर वेरिएंस पूछा जाए तो वेरिएंस क्या होगा? यहाँ पे वेरिएंस होगा स्क्वायर रूट के अंदर वाला पार्ट जो 6 है, या तो ऐसे सोच लो, या रूट 6 का होल स्क्वायर कर दो, बिकॉज वेरिएंस इज स्टैंडर्ड डिविएशन का होल स्क्वायर, वैसे भी आ जाएगा। सो दिस इज माय वेरिएंस। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लेट अस लुक एट व्हाट इज क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, क्वार्टाइल डिविएशन इज आल्सो नोन एज सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटरक्वार्टाइल रेंज। तो सबसे पहले इसमें समझना होगा कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं। Quartiles are those values which divide the distribution into 4 equal parts when the values are, very important, when the values are arranged in ascending or descending order of magnitude। तो पहले डेटा अरेंज करना पड़ेगा। Q1 is known as the first quartile, Q2 is the middle quartile and Q3 is the third quartile। मिडिल क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं, सेकेंड क्वार्टाइल भी बोल सकते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल को we can also call it as lower quartile। थर्ड क्वार्टाइल को we can also call it as
अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो अगर ये पूरा मेरा डेटा है तो फर्स्ट 1 क्वार्टर पे लाई करता है Q1, देन हाफ पे लाई करता है Q2, थर्ड क्वार्टर पे लाई करता है Q3 एंड उसके आगे बाकी का सारा डेटा। ये जो Q2 है द सेकेंड क्वार्टाइल, इट इज बेसिकली नथिंग बट मीडियन। मीडियन क्या करता है, पूरे डेटा को एग्जैक्ट हाफ में डिवाइड करता है व्हेन द डेटा इज अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। Q2 मीडियन ही होता है, तो Q2 के लिए कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, मीडियन फाइंड करेंगे तो वही Q2 होगा। Q1 और Q3 मेन चीज है यहाँ पे, क्वार्टाइल डिविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है ये Q3 माइनस Q1 बाई 2। Q3 माइनस Q1 करेंगे तो ये आ गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, डिवाइड बाई 2 किया तो ये आ गया सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज सेम एज क्वार्टाइल डिविएशन। ठीक है, अब निकालेंगे कैसे Q1 और Q3? Q2 तो मीडियन होता है, वी नो हाउ टू फाइंड मीडियन। Q1 है द साइज ऑफ, साइज का मतलब वैल्यू ऑफ n+1 by 4th डेटा or item, and Q3 is size of 3 into n+1 by 4th item. Size again means value of। तो निकालेंगे कैसे, एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्वार्टाइल डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हमें निकालना है। The first thing we have to do in this question is arrange all the numbers in ascending order। तो अरेंज करते हैं, which is the smallest one here? The smallest one is 17, then we have I think 20, then we have the next one should be 26, then 28, उसके बाद 32, 34, 36, 38, 32, 34, 36, 38, then we have 43, 49, sorry पहले 41 आएगा, 41, 43, 49। How many numbers are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो Q1 क्या होगा? n is 11, 11 plus 1 by 4th आइटम, उसका वैल्यू। तो 12 by 4, 12 by 4 मतलब थर्ड आइटम या थर्ड नंबर या थर्ड वैल्यू। तो थर्ड वैल्यू क्या है? 26। Q3 क्या आएगा? साइज ऑफ 3 into 11 plus 1 by 4th आइटम। सो 3 into, ये तो 3 आ रहा था ना, 3 into 3 मतलब 9th आ गया ना, ये ब्रैकेट के अंदर तो 3 ही आएगा। 3 into 3 9th आइटम, या 9th वैल्यू का 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज 41। तो क्वार्टाइल डिविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या होगा? 41 माइनस 26 डिवाइड बाय 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, that is equal to 15 divided by 2, which is 7.5। ठीक है, will be 7.5। ऑलराइट, अच्छा यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि ये 11 डेटा है, तो इसको अगर मैं क्वार्टर्स में डिवाइड करूं तो फर्स्ट क्वार्टर ये अरेंज करने के बाद अगर मैं इस डेटा को क्वार्टर में डिवाइड करूं तो फर्स्ट क्वार्टर ये होगा। सेकेंड क्वार्टर जो होगा मतलब हाफ ऑफ द डेटा विल बी 3 छोड़ के 1 2 3, देन 1 2 3। सेकेंड क्वार्टर यहाँ पे आएगा मतलब ये Q2 है, और यू कैन से दिस इज द मीडियन। थर्ड क्वार्टर 1 2 3 थर्ड पे आएगा, ये थर्ड क्वार्टर है, और यू कैन से दिस इज द थर्ड क्वार्टर। ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर। तो ये ही Q1 होगा, इसकी वैल्यू Q1 हो जाएगी इस केस में, इसकी वैल्यू हो जाएगी Q2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी Q3। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज या क्वार्टाइल डिविएशन आ जाएगा। ठीक है, ओके।
One last thing we'll see in case of standard deviation and variance. Suppose ये डेटा है हमारे पास x1, x2, x3 and so on till xn. All right, all this data we have. इस डेटा का स्टैंडर्ड डिविएशन s है और वेरिएंस v है. लेटर से स्टैंडर्ड डिविएशन s है और वेरिएंस v है. Now if I have a new data in which we are doing p into x1, what is p? P is some number. What is q? Q is some number. P into x1 plus minus q, p into x2 plus minus q, p into x3 plus minus q and so on till p into xn plus minus q. अब ये नया डेटा अगर ये है तो इसका जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो p इंटू एस हो जाएगा. मतलब पुराने स्टैंडर्ड डिविएशन में ये p मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. और जो वेरिएंस होगा उसके लिए पुराने वेरिएंस में p का स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट वी मीन टू से इज कि किसी नंबर में प्लस माइनस q करने से, वेयर q कैन बी एनी नंबर, सो इन एनी डेटा if you add a constant or subtract a constant from each of the terms, that will not change the standard deviation or the variance. अगर किसी set of data में if you add or subtract a constant, constant मतलब कोई number, if you add or subtract a number, a common number from each of the terms, then the standard deviation and variance will not change, it will remain the same. लेकिन जैसे ही आप डेटा में कुछ मल्टीप्लाई करते हो, जैसे यहाँ p मल्टीप्लाई हुआ है, ये q के ऐड होने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, यहाँ पे q का कोई लेना देना नहीं है, राइट. लेकिन p अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इफ यू मल्टीप्लाई एनी कॉमन नंबर टू ईच ऑफ द डेटा, देन अकॉर्डिंगली आपका स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस चेंज हो जाएगा. सो इफ यू आर मल्टीप्लाइंग p टू ईच ऑफ द नंबर्स, देन न्यू स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी p इनटू द ओल्ड स्टैंडर्ड डिविएशन एंड वेरिएंस विल बी p स्क्वायर इनटू द ओल्ड वेरिएंस. ठीक है. इसका एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे दो एग्जांपल्स हमारे पास. एडिशनल क्वेश्चन फोर्थ का फर्स्ट पार्ट सेज वेरिएंस ऑफ दिस डेटा x1 प्लस a बाई 9, x2 प्लस a बाई 9 एंड सो ऑन, वो p स्क्वायर है. तो what will be standard deviation of this data? x1 plus a by 9, x2 plus a by 9 and so on till xn plus a by 9. इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा? वेरिएंस p स्क्वायर है तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो होगा वो होगा p, क्योंकि स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है. तो इन सारे डेटा का अगर वेरिएंस p स्क्वायर गिवन है तो स्टैंडर्ड डिविएशन p होगा. नाउ यू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स बाय 9, इन सब में इंटू 9 करना है. इंटू 9 करने के बाद क्या बचेगा? x1 प्लस ए, x2 प्लस ए एंड सो ऑन टिल xn प्लस ए. सब में 9 मल्टीप्लाई करना है तो ये बचेगा. एंड सिंस यू मल्टीप्लाइड 9 टू ईच ऑफ द डेटा, तो अब अगर इसका स्टैंडर्ड डिविएशन p है तो इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या आएगा? ये सारे नंबर्स, इन सारे नंबर में 9 मल्टीप्लाई करके आया है, तो यहां से यहां जो स्टैंडर्ड डिविएशन का चेंज होगा उसमें हम क्या करेंगे? p में 9 मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 इंटू p. ठीक है. क्योंकि सब में ये p मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ p इंटू एस हो गया ना. तो जो भी नंबर इंटू 9 हर जगह हो रहा है तो इसमें भी इंटू 9 हो जाएगा, 9p हो गया. ठीक है. एंड what will be the standard deviation of now x1, x2 and so on till xn. अब ये प्लस ए प्लस ए प्लस ए था, वो हटाने के लिए हर जगह माइनस ए माइनस ए माइनस ए करना पड़ेगा. तो सारे टर्म्स में माइनस ए कर रहे हैं हम. कुछ भी कॉमन चीज माइनस करने से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता है. इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 9p है तो इसका भी स्टैंडर्ड डिविएशन 9p ही रहेगा. ठीक है. मल्टीप्लाई में चेंज होता है, प्लस और माइनस में देयर इज नो चेंज. तो आंसर इज 9p. ऑलराइट. यहाँ देखो इसका सेकंड पार्ट में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 4x1 प्लस 7, 4x2 प्लस 7, 4x3 प्लस 7 till 4x15 प्लस 7 is 4n.
इसका स्टैंडर्ड डिविएशन 4n है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, ये 7 अपने माइनस करेंगे। 7 माइनस करने से स्टैंडर्ड डिविएशन तो चेंज नहीं होने वाला। उसके बाद हम standard deviation of, now look at how to get standard deviation of x1, x2 and so on till xn। इसके लिए इन सब में से -7 करना पड़ेगा। -7 करने से स्टैंडर्ड डिविएशन इज नॉट गोइंग टू चेंज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इन सबको, अब मेरे पास बच गया 4x1, 4x2 and so on till 4xn। now I will divide all the numbers by 4, then I am left with x1, x2 and so on till xn। 4 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। या यूं कह लो कि इन सारे नंबर्स में इंटू 1/4 करेंगे तो ये 4 हटेगा, इसमें भी इंटू 1/4 करेंगे तो स्टैंडर्ड डिविएशन इन नंबर्स का n हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5x1, 5x2 एंड सो ऑन टिल 5xn। अब इन सब में 5 मल्टीप्लाई किया तो स्टैंडर्ड डिविएशन भी 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 5n हो जाएगा। व्हाट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 5x1 plus 11, 5x2 plus 11 and so on 5xn plus 11। अब इन सब में आपने 11 ऐड किया है, लेकिन ऐड करने से स्टैंडर्ड डिविएशन चेंज नहीं होता है, तो ये +11 की वजह से देयर इज नो चेंज, सो इट विल रिमेन 5n, ठीक है। तो अगर इन सारे नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन 5n है तो इन सारे नंबर्स का वेरिएंस क्या होगा। वेरिएंस कैसे आता है, जब स्टैंडर्ड डिविएशन का आप होल स्क्वायर करते हो। तो अगर यहाँ वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ 5n का होल स्क्वायर हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन 5n था तो वेरिएंस 5n का होल स्क्वायर हो जाएगा, सो दैट विल बी 25n स्क्वायर, ठीक है। दैट इज द आंसर, ऑलराइट। So that will be all in this topic. I hope you have understood all this, and I will suggest you that you revise all the concepts in this. ज़्यादा कुछ है नहीं, it's basically formula driven approach. So try to learn on the formula. इसके exercises solve कर लेना। Exercises solve करने से क्या होगा कि formula आपको याद रहेगा, ठीक है। If you practice more, you will be able to remember the formula. You do not have to mug up the formula, right? So practice the question from the exercise of SM booklet and you will be very comfortable with this topic. Fine? Okay. Thank you so much. Hello students, welcome to Time Classes. We are going to learn a very small but interesting topic of quantitative aptitude, which is known as special equation. I hope you are doing well and all set for today's class. So please quickly check the handout code. It is QAHO 1002120. All right, let's start. This topic require the understanding of HCF LCM and solution of linear equation. So in mathematics, this topic is popularly known as Diophantine equation. So this name is slightly heavy. So let me discuss the meaning of a special equation first. This is known as Diophantine equation. Means if you are interested in integral solution, or you can say the equation which gives us an integral solution, are called Diophantine equation. So basically we are going to focus upon the equations which gives us the integral solution, either positive integer or negative integer or mixture of positive and negative both. So what are the criteria for a equation
to give integral solution. Which kind of equation can give us the integral solution? Suppose if you say 3x plus 5, or you can say 5y is equal to 29. Suppose this is your equation, but we are not interested in all real number solution of this equation. We are rather interested in the integral solution of this equation. So can we get integral solution from this equation, or this equation will not give us any integral solution? So what are the criteria, what are the specific condition right now for equation, so that equation gives us an integral solution? What are the specific check we need to see in the equation, so that we can assure that the given equation will certainly gives us an integral solution? Now I'm starting from a very basic point, and the point is HCF of two number. You can note it down. HCF of two number. Let's say 60 and 84 is a pair of number, and HCF of these two number is equal to 12. So HCF of two number can always be expressed as the linear combination of two number. So the important point is, you can consider this as your note. This line is basically the building block of whole chapter. So HCF of two number can be expressed as the linear combination of two number, can be expressed as the linear combination of two numbers. So HCF of two number can be expressed as a linear combination of two numbers. So suppose your number is 60 and 84, then this 12 can be expressed as the linear combination of 60 and 84. So suppose the linear combination of 60 and 84 is 60x plus 84y. So 12 can be expressed in terms of 60 and 84. So HCF of any two number can always be expressed as the linear combination of two number. So can we solve this equation? Answer is certainly yes. There must be some value of x and y, so that 12 can be expressed in terms of 60 and 84. Can I say, if you multiply this equation from 2, this equation from 3, 60 into 3 is 180, and 84 into 2 is 168. So 84 into minus 2. So 60 into 3 and 84 into minus 2 is 180 minus 168 is equal to 12. Can I say? So 12 can be expressed in terms of 60 and 84. So the important point is, HCF of two number can always be expressed as the linear combination of two number. Now this line is basically the building block of this chapter, right? So if you express 12 in terms of 60 and 84, so we can express any multiple of 12 in terms of 60 and 84. So my second observation is, HCF of two numbers and its multiple, means multiple of HCF, can always be expressed
as the linear combination of two numbers, can always be expressed as the linear combination of two numbers. So HCF of two number and its multiple can always be expressed as the linear combination of two number. So we can express all multiple of 12, 60x plus 84y is equal to 12k. So all multiple of 12 can be expressed in terms of 60 and 84. So whenever right hand side is HCF or multiple of, you can say my equation is ax plus minus by is equal to k. So whenever the right hand side is either HCF of a and b or multiple of HCF of a and b, we always have integral solution. This is your short point. So whenever right hand side is either multiple of HCF of a and b or HCF of a and b, we always have an integral solution. This is your precondition. Let me repeat once more. If your equation is ax plus minus by equal to k, and suppose the right hand side is either HCF of a and b or multiple of HCF of a and b, then we always have integral solution. So come to the point. So whenever this is your note number 3, suppose your equation is ax plus by is equal to k. So whenever k is either HCF of a and b or its multiple, we always have integral solution. So whenever k is either HCF of a and b or its multiple, we always have integral solution. I hope this is fine. This is my note number 3. Alright. Now, note number 4. Suppose your equation is like 60x plus 84y is equal to, let's say, 52. And your question is, find the number of integral solution of this equation. Or I want to check whether integral solution of this equation is possible or not. Now look at the number 60 and 84. Can I say the HCF of 60 and 84 is 12? Alright, and you can see over here this 52 is not multiple of 12 or not multiple of HCF. So what is your conclusion? Whenever we have this kind of scenario, your answer is no integral solution. No integral solution. Your answer is no integral solution. I hope this is fine. I hope all note is clear. So your first note is HCF of two number can always be expressed as the linear combination of two number. Now note number 2, HCF of two number and its multiple can always be expressed as the linear combination of two number. Now your third note is whenever we have equation like ax plus by equal to k,
and if K is multiple of HCF or HCF of A and B, we always have integral solution. This is the precondition for an equation to have integral solution. This is precondition for an equation to have integral solution. But if right hand side is not multiple of HCF, if right hand side is not multiple of HCF, we do not have any integral solution. We do not have any integral solution. I hope this is fine. Right. So I'm going to generalize. Once you get the particular solution of any special equation, how can we generate the other integral solution? How can we fetch the set of integral solution in one go? So I'm going to discuss the mechanism and some proof. So let's say your special equation is ax plus by equal to c. C is any constant, and x naught y naught is your particular solution. Since x naught y naught is a particular solution that you have identified from either trial and error method or mathematical approach, so x naught y naught you need to find out. Can I say this x naught y naught will also satisfy the equation? This is again equal to c. Can I say ax plus by is equal to ax naught plus by naught? A x minus x naught is equal to b y naught minus y. So can I say a upon b, or you can say a upon, rather you can say x minus x naught upon b is equal to y naught minus y upon a. Let's say this equal to some constant k. Why it is equal to some constant k? Because b and a are most likely co-prime number. Why? You know that we can calculate the integral solution only when this c is multiple of HCF of a and b. If c is either HCF of a and b or multiple of a and b, multiple of HCF of a and b, it means that we can always convert our original special equation in such a manner that coefficient of x and y are co-prime number. So a and b are co-prime number. We can, if it is not, then we can convert, right? So x is basically equal to x0 plus bk, and if you solve y, it is y0 minus ak, where k is any constant. It could be plus minus 1 or plus minus 2 or plus minus 3 and so on. X and y are the series of the values of x and y. Once you got the particular solution x0 and y0, you can generate this x and y. You can notice one thing: the value of x and y will increase or decrease, either increase or decrease in terms of coefficient, of y and x respectively. Now you can see over here the value of x is increasing in terms of
b into k, and value of y is decreasing in terms of a, which is coefficient of x. The value of x and y will increase or decrease in terms of coefficient of y and x respectively. So x in terms of coefficient of y, or in terms of b, or y in terms of coefficient of a, that is in terms of a. X in terms of coefficient of y and y in terms of coefficient of a. For better understanding, let us try to observe this pattern in some practical example. So once you get the value of particular solution x naught, y naught, you can calculate the series of the values of x and y with the help of coefficient of y and x respectively. So let us move to the practical example. This is type 1 and your standard form is ax plus by is equal to k. Or you can say rather ax plus by is equal to some constant, and this constant is either HCF of A and B or a multiple of HCF of A and B. So look at the question number 1 of your handout. Your standard form is ax plus by equal to c. So what your question number 1 says? 4x plus 5y is equal to 100. And your question is, how many positive integral solutions do the following equation have? So whenever you want to calculate positive integral solution, so first of all you need to ensure that whether integral solution is possible or not. So what is the HCF of 4 and 5? Can I say the HCF of 4 and 5 is 1. Can I say the right hand side is 100 is multiple of HCF? Means right hand side is multiple of HCF of 4 and 5 or not? Answer is yes. So positive integral solution, or you can say integral solution, is very much possible, because if right hand side is either HCF or multiple of HCF of A and B, then we always have integral solution. Now let us try to find out the first solution, or you can find out any random solution. Try to find out any solution, any integral solution of this equation as per your convenience. It is not very difficult to see that. Since 100 is multiple of 4, can I say 25 and 0 will satisfy this equation? 25 and 0, 25 into 4 is x is 25 and y is 0, is true or not? And what we have learned little while ago, the coefficient of x and y, rather the value of x and y, the value of x and y increase or decrease in terms of coefficient of y and x respectively, right? Now just try to use this concept over here. Can I say x is 25 and y is 0 is any solution? So naturally if x will increase, the y will decrease. I hope this is fine. Since there is a sign of addition between 4x and 5y, so if x will increase then y will decrease, or vice versa. If x will decrease then y will increase. So what is the next solution? So coefficient, the value of x and y increase or decrease
in terms of coefficient of y and x respectively. So if x will decrease, then y will increase, can I say? And why we are interested in those number in which x is in decreasing pattern and y is in increasing pattern? Because you are interested in integral solution. So if x will decrease, then y will increase. So 25 minus 5 is how much? 20. And 0 plus 4 is how much? 4. Look at the solution. 20 and 4 will satisfy this equation or not? 20 into 4 is 80. 4 into 5 is 20. So x is decreasing in terms of coefficient of y, and y is increasing in terms of coefficient of x. 25 minus 5, 20. 20 minus 5, 15. So 4 plus 4, 8. Look at the solution. 15 into 4, 60. 8 into 5, 40. So 60 plus 40 is 100. Now 15 minus 5, 10. 8 plus 4, 12. So these are the value of x and y. 10 minus 5, 5. And 12 plus 4, 16. And 5 minus 5, 0. And 16 plus 4, 20. And so on. Can I say we have infinite number of integral solution? We have infinite number of integral solution. But we are interested only in positive integral solution. So far the positive integral solution is concerned, we have 24, 15, 8, 10, 12 and 5, 16. So how many solutions you have? 4 solutions. So the short point is the value of x and y will increase or decrease in terms of coefficient of each other. If x will increase, then y will decrease. If x will decrease, then y will increase. But in terms of coefficient of each other. Now, you can note down this point also. You can consider this as your note number. We have discussed till note number 4, note number 5. Note number 5. Can I say whenever coefficients are co-prime number, we always have integral solution. We always have integral solution. Why? Because right hand side would be by default multiple of HCF of those two co-prime number. We know that if A and B are co-prime number, AX plus BY is equal to C. If A and B are co-prime number, then their HCF would be 1. So right hand side would be by default multiple of HCF of A and B. HCF of A and B would be 1. So whatever be the value of C, right hand side would be multiple of HCF of A and B, and whenever right hand side is multiple of HCF of A and B, we always have integral solution. So the short point is whenever coefficients are co-prime number, we always have integral solution. This is note 5, right? Whenever right hand side is multiple of HCF of A and B, we always have integral solution. But if coefficients are co-prime number, then right hand side is by default multiple of HCF. So we always have integral solution. This is your type number 1. Now let us consider one example in which there is a sign of subtraction. You can consider example number 4. Type 2. If your standard form is AX minus BY is equal to C. AX minus BY is equal to C. Now look at the number, look at the equation.
This is number 4. 6x minus 7y is equal to 129. 6x minus 7y is 129. Now you can see over here 6 and 7 are co-prime number. 6 and 7 are co-prime number. So try to figure out any solution. Any solution. Can I say you can find out the first particular solution either with the help of trial and error method, or we can use mathematics. Either way you can go. Let's say if y is 0, then x is not possible because 6x cannot be equal to 129. So no integral solution is possible. If y is 1, so 129 plus 7 is 136 is not multiple of 6. So we do not have any integral solution. 2, if y is 2, so 7 into 2 14 and 129 plus 14 is 143 is not multiple of 6. If this is 3, so 7 into 3 is 21. So 129 plus 21, 129 plus 21 is multiple of 6. So x is turning out to be 25. Can I say this is your first solution? So this first solution can be determined by either trial and error method or mathematical approach. So what is your first solution? You can see 6x minus 7y is equal to 129. So my first solution is 3, y is 3 and x is 25. Now just recall the concept that we had discussed. If x will increase, then y will decrease. But this happens when there is a sign of addition between ax and by. But this time we have a sign of subtraction. Sign of subtraction. So if x will increase, y will also increase. So in type 2, if there is a sign of subtraction, then if x will increase, y will also increase. But in terms of coefficient of each other, x will increase by plus b and y will increase in terms of coefficient of x. Right? This is your trick. This is your shortcut. So 25 and 3. 25 into 6 is 150 and 7 into 3 is 21. 150 minus 21 is 129. So what is your new solution? 25 plus 7 is 32 and 3 plus 6 is 9. If x will increase, y also increase. So next solution is 39, 15. The next solution is 45, 39 plus 7 is 46, rather 46 and 21. Then 53 and 27, right? Then 60 and 33. But look at your question. What your question says? Y is less than 30. Y is less than 30. This is your precondition. If y is less than 30, then how many solutions are possible? These are the only 5 solutions which is feasible. So 5 solution. So you can consider this as your new note 6. So whenever we have minus sign between ax and by, so if x will increase, y will also increase, but in terms of coefficient of each other. You can see over here 25 plus 7, 32. So there is a difference of 7, right? 7, and here there is a gap of 6, and so on. I hope this point is clear. So type 1 is done, ax plus by equal to c. Type 2 is ax minus by equal to c. Now, next type is, you can consider question number 6 is type 3. Type 3.
What your question says, you can consider question number 6. Again, it is either of the form ax plus by or minus by. But this is a special scenario because in this case, right hand side is not multiple of HCF of A and B, multiple of HCF of A and B. And we discussed in the beginning, when right hand side is not multiple of HCF of A and B, we do not have any integral solution. So no integral solution. No integral solution. You can see this example. Number 6 is 12x plus 15y is 247. 12x plus 15y is 247. Find the number of positive integral solution. You can see what is the HCF of 12 and 13. Can I say the HCF of 12 and 15 is 3. And you can see over here this 247 is not multiple of 3. Not multiple of 3. So what is your final answer? Final answer is no integral solution, because the right hand side is not multiple of HCF of coefficient or HCF of A and B. No integral solution. I hope this is fine. Alright. Now move to the next part. Right? Move to the next part. So what your next part says? I'm going to discuss the new type of problem in the next part. This is your type 4. Type 4. So what your type 4 says, you have a by x plus b by y equal to 1 by c kind of equation. Right? You have this kind of equation. Your question is, let us discuss question number 8 to understand this type. Corresponding to each of the type, we have some question in the handout. Your question says 1 by x plus 1 by y is equal to 1 by 20. And we want to calculate the number of positive integral solution where x and y belong to the set of positive integers. So this kind of questions are very common in aptitude test. Just try to solve this. This is x plus y upon xy, can I say, is 1 upon 20. Yes, we can write. Take the multiple of x and y. Simply solve x plus y upon xy is equal to 1 upon 20. Now do the cross multiplication. Can I say xy is equal to 20x plus 20y. Yes. Now next one is, can I say xy minus 20x minus 20y is equal to 0? Can I say xy minus 20x minus 20y is equal to 0? Can I say? Alright. If I factorize the left hand side, this is
x minus something into y minus something. So 20x and 20y, we can keep 20 over here and 20 over here. And 20 and 20 is 400. So if you write LHS as x minus 20 into y minus 20, it means that you have considered 20 into 20 as well. So just add right hand side 400. LHS and RHS both are added with 400. Then the left hand side would be x minus 20 into y minus 20, and right hand side would be 0 plus 400. Now focus upon this part. Can I say x minus 20 into y minus 20 is equal to 400. So number of solution of this equation, x and y are positive integers. 400 is basically 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 2. So number of factor is 4 plus 1 into 2 plus 1. You know the number of factor is equal to 15. 15 is the number of factor of 400. Can I say x minus 20 and y minus 20 must be the factor of 400? So far the number of positive integral solution concerned. So for x minus 20, how many values we have? If it is 1, then this must be 400. Then your solution is, if x minus 20 is 1 and y minus 20 is 400, then x is 21 and y is 420. Can I say? Similarly, if it is 2 and it is 200, if x minus 20 is 2, then x is 22 and y is 220. Can I say corresponding to each of the pair of x minus 20 and y minus 20, we have a value of x and y. So similarly 400, 580 and so on, 580, right, and so on. How many solution? It must be equal to number of factor of 400. So last one, it is 400 and 1. We can swap the value as well, because x is 21 and y 420, or x is 420 and y is 21 are two different solutions. So how many values of x are possible? It is simply the number of factor of 400. So answer is 15 positive integral solution. Corresponding to each of the factor of 400, we have a value of x and y. If x minus 20 is 1, then x is 21. If x minus 20 is 400, x is 420. What is your answer? 15. So this is your way. This is your approach to answer such kind of question. Right? I hope this is clear. There is no any shortcut. You have to express all such kind of question as the factor of x minus something and y minus something kind of thing. If x minus something into y minus something kind of thing is some factor, some constant, we can always solve. Alright. Now move to the next part. So 1 by x plus 1 by y equal to 1 by 20. Alright. Now move to the next type of question. So x square minus y square is equal to 385. You can consider this as type number. Last was type 4. This one is type 5. Type 5. X square minus y square is equal to some constant in the new type. Let us try to solve first part.
or rather I would like to solve first the fourth part. X square minus y square is equal to 560. We already have discussed this variety of question in your numbers chapter. X square minus y square is 560. So find the number of positive integral solution of this equation. Can I say? We can write this one as x plus y into x minus y is equal to 560. Now, you know that you already have learned in number, then if x plus y is even number and x minus y is even number, then we always have integral solution. This is case number 1. First possibility. X plus y and x minus y must be even. Otherwise, if x plus y is even number, x minus y is even number, we always have natural number solution or positive integral solution. Now, second variety is, let's say x plus y is even and x minus y is odd. In this case, integral solution is not possible because if you solve these two equations, then 2x would be odd number, right? 2x would be odd number, which is not possible. If you add these two equations, then 2x would be even plus odd is odd, which is not possible. So case 2, no integral solution. Now case 3. If x plus y is odd number and x minus y is also odd number, if x plus y is odd and x minus y is odd, then 2x is even number. So x is always an positive integer or integer. So odd plus odd is even, and x plus y plus x minus y is 2x. If 2x is even number, then x must be integer. So for integral solution, what is the short point? Either both numbers should be even or both numbers should be odd. If one of the number is even and other number is odd, then we do not have any integral solution, right? We do not have any integral solution. Now try to solve this question. Can I say for integral solution, this number should be even number, let's say 2u, and this number should be also even number. So either even or odd. These are the only two scenarios in which we can calculate, we can find out the positive integral solution. But 560 is an even number. So of course this number cannot be expressed as the product of odd and odd. Can I say? So the only choice that we are left with, even and even. Otherwise x and y cannot be positive integers. So x and y are positive integer only when both the numbers are even number. Both number cannot be odd number because right hand side is 560. Now can I say 4 times uv? We have a sign of multiplication. So 4 times uv is equal to 560. So what is uv? uv is equal to 140. So 2 square into 5 raised to the power 1 into 7 raised to the power 1. So you can see over here x plus y is greater than x minus y. Can I say? Since x and y are positive integer, so x plus y is greater than x minus y. So this number can be expressed
at the product of two numbers in which u is greater than v in how many ways? You know the formula, it is half the number of factors, half the number of factors. It is half 2 plus 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1. So this is 3 into 2, 6 ways, can I say? This is 6 ways. 6 ways. So like 140 into 1, 70 into 2, right? 80 into 3, 60 into 4, 48 into 5, right? How many ways? 140 into 1, 70 into 2, some calculation mistake, 70 into 2, it is not 240, it is rather 140. Then we have 4 into 35, 35 into 4, then 28 into 5, then 20 into 7, and 14 into 10. These are the 6 solutions. These are the 6 solutions. You can take any of the pair. If u is 28 and v is 5, can I say x plus y is 56, 28 into 2, 2u is x plus y. X plus y is 2u and x minus y is how much? 10. 5 into 2, 10. If you solve these two equations, then x is 33 and y is 23. 56 plus 10 by 2, 33. 56 minus 10 by 2, 23. So x is 33 and y is 23. So 33 square minus 23 square is 560. Is one of the solution. So corresponding to each of the pair of u and v, we have a pair of x and y. X is 33 and y is 23, corresponding to 28 and 5. So how many solutions you have? Answer is simply 6 solution. It is half the number of factor of 140. So what is short point? Can I say the short point is whenever we have x square minus y square equal to k, then the positive integral solution is possible when k is even number and multiple of 4. Why it is multiple of 4? Because x plus y into x minus y is equal to k have integral solution only when these two numbers are even number, even into even, and even into even is equal to k means k has to be multiple of 4. K is either multiple of 4. And the second possibility is x square minus y square is equal to k. K is an odd number. If k is odd number, then x plus y and x minus y both are odd number. If both are odd number, then we always have integral solution. So first condition, either it is multiple of 4. Second condition, k is odd number. Right? What happens? These are the two conditions. Now, what happens when the right hand side is even number and not multiple of 4? For example, you can see part 2 of this question, question number 10. If it is x square minus y square equal to 110, and we want to calculate the positive integral solution of
this equation, can I say it equals to x plus y into x minus y equal to 110. But it cannot be expressed as odd into odd. 110 cannot be odd into odd because 110 is even number. Neither it can be expressed as even into even. Why? Because 110 is not multiple of 4. Not multiple of 4. So what is your answer? If right hand side is neither an odd number, not a multiple of 4, my answer is no integral solution. No integral solution. I hope this is fine. Now come to question number 2 is a story based question. So in a special equation, some story based question might be asked in your examination, but the question is certainly based upon the different type that we have discussed so far. The type that we have discussed till now is sufficient to solve all varieties of question. Look at this question. 13 times Raju date of birth. So 13 times date of birth plus 19 times the month of birth is equal to 522. So 13 times date of birth plus 19 times month of birth is equal to 522. So find the date of birth of Raju. Can I say 13x plus 19y is equal to 522. So for x is concerned, since it is date of birth, so range of x is 1 to 31. And y is month of birth, so range is 1 to 12. Can I say? Now, try to figure out the first solution of this equation 13x plus 19y is equal to 522. Can I say from trial and error method? It is slightly difficult to get the first solution. Y is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. It might take some time. So I'm intentionally discuss this question to understand what is the mathematical approach to get the first solution. Once you get the first solution, you can calculate all possible solution, or you can say infinite number of solution, because you know that the value of x will increase or decrease in terms of coefficient of y, and value of y will increase or decrease in terms of coefficient of x. So can I say 13x is 522 minus 19y. So x is equal to 522 minus 19y upon 13. So we normally express numerator in terms of denominator intentionally. Can we write this one as 13 into 40 plus 2 is 522 minus something multiple of 13, either minus 13y minus 6y or minus 26y plus 7y. 26 is multiple of 13 upon 13. Can I say this is 13 times 40 minus 2y plus 2 plus 7y divided by 13 is basically 40 minus 2y plus 2 plus 7y upon 13. If y is integer, then 40 minus 2y will also be an integer. But find the suitable value of y so that 2 plus 7y is multiple of 13. Right? Find the suitable value of y so that 2 plus 7y is multiple of 13. So 2 plus 7y cannot be 13, because 7 into 2 plus 2 is not 13,
it is not equal to 26 because 7 into 3 plus 2 is 23. It is not equal to 39 because 7 into 5 plus 2 is 37. It is not equal to 52 because 7 into 7 plus 2 is 51. But it can be equal to 65 for what value of y? When y is equal to 9. So 2 into 2 plus 7 into 9, 63 is 65 is multiple of 13. Can I say if y is 9, then x is 40 minus 18, 22 plus 65 upon 13 is equal to 27. Can I say 27 and 9? Now you know that 13x plus 19y is 522. The first solution is 27 and 9. X is 27, y is 9. What would be second solution? If x will decrease, then y will increase. So 27 minus 19 is 8 and 9 plus 13 is 22, which is not possible because month cannot be 22. The range of x and y is already written over here. So after this we do not have any solution, and before 27 plus 19 is 46, which is again not possible because date cannot be 46, and 9 minus 13 is rather minus 4. So once you get 27 and 9, you can find infinite number of solution, but 46 minus 4 is not possible. Why? Because 46 cannot be date of birth, and 8 and 22 is not possible because 22 cannot be month of birth. So what is your answer? 27 9, 27th September. All right. So this is what special equation is. These are the technique to solve the question based upon a special equation. All right. Thank you. Thank you very much.